अच्छा, तो भाई के कहने पे आपने एफएम पे स्टार्ट करने का सोचा। हाँ. तो जब भाई ने सजेस्ट किया तो क्या चीज़ थी सजेशन में जो आपको अट्रैक्ट की? बिकॉज कभी पहले किया नहीं था, सोचा भी नहीं था, एंड यू वर अ रिजर्व्ड पर्सन, वेरी सीरियस इंट्रोवर्ट, राइट? आई एम अ ह्यूज इंट्रोवर्ट इन अ वे कि अभी इस सेट पे भी मुझे इतनी चीज़ें पता लगी हैं अपने बारे में, and it was quite funny. But coming back to this, I started. अभी बताते भूल नहीं जाइएगा, बाद में परेशान पे बात करनी, अभी हम परेशान Yeah, करेंगे तो हमें वो funny बात बतानी है। But when my brother, he started radio before me, like 6-8 months before I did, and he was working for 96 at that point, और वो बिल्कुल एक brand new station था, and I was working at City FM 89. अच्छा. और वहाँ पे I used to review albums. A friend of mine actually approached me and he was like, you know, you have a good voice and we have this time slot 1 घंटे का, और जितनी भी नई albums आती हैं, all you have to do is hear the entire album and उसका तुम थोड़ा सा बता दो कि अच्छी है या कौन सा गाना बहुत अच्छा है। तो ये आरजे से पहले आप रिव्यू कर रही थी? Yeah, 1 घंटे का slot once a week. Not bad. You know, and वहाँ से मैंने शुरू किया. 6 months I worked with them, and then my brother was like, you know, you have to come here. We are dying to give you a live show. तो उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था वो live show ये वो. When I actually did my first live radio show, my knees were shaking. मेरी आवाज़ कांप रही थी. I was terrified, despite the fact that nobody could see me, you know. But it was such a rush. And I was like, wow, I want to do this. Okay. I love this. Because एक आपको मज़े की चीज़ ये पता लग जाती है कि nobody cares what you look like. Yes. आपको देख नहीं रहा। सुकून है ना। हाँ। कुछ पोनी बांधो, कुछ है ना, जाके बैठ जाओ। जब मैं सुबह का शो मॉर्निंग चस्का किया करती थी, this is FM 91 पे, where I worked I think the longest, and they became my family. और जब मैंने छोड़ा था, I was just so sad. But I used to go in my pajamas and, you know, कप हाथ में अखबार खुला हुआ है, and you're doing a show for 2 to 3 hours and you're chill. It's a good life. So वो जो मुझे चस्का लगा था रेडियो का, तो I did radio for like 10-11 years. तो लोग पहचानते थे, फिर आवाज़ से पहचाने थे जब बाहर जाती थी, वो कोई कुछ हुआ वो बताएं? आवाज़ से मुझे पहचानना लोगों ने तब शुरू किया जब मैं टेलीविजन पे आई. अच्छा, okay. वहाँ when they saw me and they heard me, they were like, ये तो वो है, ये तो वो है, ये तो वो है. So that was kind of nice कि मेरी शक्ल से नहीं, मेरी आवाज़ से लोगों ने मुझे पहचाना. अच्छा, इसकी ये शक्ल और ये आवाज़ दोनों एक बंदे की है. Then people realized कि वो अच्छा. अच्छा, मैं वैसे एक बात सोची थी जब मैं आपका पढ़ी थी कि because you were introvert, तो मुझे लगा कि maybe as an RJ something जो लोग बहुत रिजर्व्ड होते हैं, बहुत कॉन्शियस होते हैं, उनके लिए एक चीज़ हो जिसपे वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, समथिंग, बिकॉज यू नो वो थोड़ा सा पीछे रह के शक्ल सामने नहीं होती, एक आइसोलेटेड उसमें होते हैं, तो आप अपनी एक आर्टिस्टिक एबिलिटी को डिस्कवर कर सकते हैं while not being so uncomfortable. Would you say that? I believe so. I think radio is all about your personality. जब मैंने रेडियो ज्वाइन किया तो I was very in my rock and roll phase, you know, but at the same time I realized कि it's almost like आप किसी के साथ बात कर रहे हैं. Yeah. You know, you're getting to share information with somebody. I'm sorry, this. It's okay. This watch is just. We have a third guest. I know. Another guest in our show today. But you know, I realized that radio is all about your personality, and it's also a very good platform to train yourself. For I think vocally आप बहुत सीखते हैं कि आप अपनी आवाज़ को किस तरह कंट्रोल करें. आपको सिखाया जाता है कि अगर आप सुबह का शो कर रहे हैं तो आप ऐसे नहीं कर सकते. There is, you know, आपको नीचे कर लोग उठे हुए हैं, अभी सो के उठे हैं, they're heading to work. Don't yell. You want to be nice to them. Yeah, don't Already yell. अम्मा चीख चुकी है उन पे, या बीवी चीख चुकी है. Smooth आवाज़ में आप बात करेंगे, ये टोन रहेगी. अगर इवनिंग शो है तो it's going to be like, hey, what's up? You know, because it's drive time, people are going home, they want to listen to something nice. So A, I learned that. B, I realized that being introvert is one thing, but I'm able to hold a conversation in an empty room with a mic, just being me.
because it's kind of like a one-way conversation, you know. कोई बोल तो नहीं रहा वापस. और मजा भी आता है, बोल दो या जो बोलना है, कोई जवाब तो So ना कोई चैलेंज कर सकता है. For introverts, that's the best thing that you can do. Be in an empty room with a mic and just go nuts. Because और कोई नहीं है, हाँ लोग आपको सुन रहे हैं, but कमरे में तो कोई नहीं है ना, so you have nothing to fear about. अच्छा, तो फिर जब VJ पे आई उसके बाद you became a VJ. Yes. तब क्या, जब पहला शो गया तब क्या हालत ख़राब थी, जब अपने आप को देखा तब क्या रिएक्शन था? I was scared because I remember मेरा first live show जो था वो एक experiment था. हाँ, मुझे सीधा live में फेंका है लोगों ने कि That is scary. Recorded कुछ नहीं होता, live करेंगे. So for my first ever live show, I went to Islamabad. वहाँ से एक live feed थी and I was supposed to do the show there. और मैं इतना ज़बरदस्त वाला ब्लैंक आउट हुई थी उसके बाद कि आई डोंट रिमेंबर दैट शो. आई जस्ट रिमेंबर कि मैंने ग्रीन रंग का शायद कुछ पहना हुआ था एंड आई वाज वेटिंग इन द मेकअप रूम. उसके बाद मेरी मेमोरी ब्लैंक है. बट अपेरेंटली आई डिड समथिंग राइट बिकॉज उसके बाद आई वाज डूइंग लाइक 2-3 shows a week, live shows a week. But it was a scary experience, but lucky for me I've never been afraid of the camera. Okay. You know, मुझे कभी डर नहीं लगा कैमरे से, ना माइक से. So I think that kind of gave me the confidence to go and do acting as well. Yeah. तो जब हमसफर की ऑफर आई तो हाँ क्यों बोला? Because acting कभी कार्ड्स पे थी नहीं. You wanted to experiment? Yeah, I was thinking कि RJ and Curly, I was a DJ for 4 years, so what do I do now? Next, you were looking for the next step. Okay. You know, I thought about being an anchor. But I did a sports show for like 6 months and that was terrible because I didn't know anything about sports. मुझे कुछ नहीं पता sports के बारे में, मुझे कोई शर्म नहीं है admit करने में. And I realized I was like, I can't do this because मुझे तो information ही नहीं है इस चीज़ की. So while I was pondering and wondering and thinking, मुझे call आ गई इत्तेफाक से. And I was like, okay, audition देने में क्या है, चली जाती हूँ. I went, I auditioned. 15 minutes later. And they were like कि हम आपको स्क्रिप्ट भिजवा रहे हैं. और फिर स्क्रिप्ट आई. हाँ, अच्छा वो मैंने पूरी स्क्रिप्ट भी नहीं पढ़ी थी, मुझे सिर्फ अपने सीन्स मिले थे. अच्छा, ओके. So अब तो मैं I read the entire thing ताकि मुझे पता हो कि कहानी किस तरह जा रही है, कैसे बढ़ रही है, कैरेक्टर का आर्क क्या है. उस वक्त मुझे वैसे इतना सा आया था, एक सारे सीन्स मेरे थे. And then when I went on set, तो डायरेक्टर के साथ बैठ के फिर मैंने जोड़ी कहानी कि अच्छा ये हुआ था, अच्छा ये क्यों बोल रही है, अच्छा ये हुआ था. बिकॉज आपको सिर्फ अपने सीन्स मिलते हैं तो यू डोंट नो कि बिल्कुल समझ नहीं आएगी, जो कहानी समझ में नहीं आ रही थी. हाँ, आप बड़ी बहादुर हैं कि फिर भी आपने हाँ बोल दिया. बिकॉज आई थॉट आई वाज इंटरेस्टेड इन प्लेइंग द बैड गाय. Because I was like, you know, this is something that is scaring me, and what scares me is normally a good thing. So I was like, हाँ ठीक है. तो फिर एनी की आएगी बारात की जब ऑफर आई तो उसने भी स्केयर किया था आपको, क्योंकि आपने इतना किया. उसके बाद यू आर डूइंग अ कॉमेडी शो और वो भी उसमें भी इतनी बड़ी कास्ट है. यू नो हमसफर वाज लाइक दिस 4 people एंड एनी की आएगी बारात में तो हर कमरे से एक बंदा निकल रहा है और हर बंदा फनी है. यू नो, सो आई वाज थिंकिंग यू वर वेरी ब्रेव टू से यस टू दैट. They convinced me. Okay, so you didn't really want to do it. No, I was interested in it. But मुझे ये था कि I believe comedy is such a hard thing to do because लोगों को रुलाना बहुत आसान है, हंसाना बहुत मुश्किल है. और वो हर एक के बस की बात नहीं होती. आपके अंदर एक natural flair होता है for comedy.